तो बच्चों जब कभी भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल विल बी प्लेड बाय आवर ह्यूमन आई, एंड in this we must understand the term power of accommodation. So what is power of accommodation? Let's try to understand that thing. Power of accommodation happens to be the ability of the human eye to adjust the lens in such a manner that the human eye can focus for the nearby object also, as well as for any object which is placed at a farther distance or a distant object also. This particular property of human eye is called as power of accommodation. तो power of accommodation क्या है कि human eye की एक ऐसी natural ability. So please try to understand, these are the keywords that are being highlighted. Natural ability to focus nearby object also, as well as farther away, a distant object also, without going for any botheration. That is a naturally with the help of ciliary muscles. ये ciliary muscles का contract होना या elongate होना, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी eye को आसानी से फोकस कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे रखा हो, कहीं पास पे रखा हो. इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन के नाम से जानते हैं. लेकिन इस पावर ऑफ अकोमोडेशन की भी एक लिमिटेशन है ह्यूमन आई में, और वो लिमिटेशन क्या है? वो लिमिटेशन है कि ह्यूमन आई कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 25 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यानी कितने डिस्टेंस पे? 25 सेंटीमीटर से लेस देन 25 सेंटीमीटर, ये उसको क्लियरली रेटिना के ऊपर फोकस नहीं कर पाता. तो ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर से कम का, इसके अंदर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट आई चूंकि फोकस नहीं कर पा रही है, तो इसलिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट डिस्टेंस बन जाता है, और इस डिस्टेंस को हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज कहते हैं, और इसको कैपिटल डी से इंडिकेट करेंगे. तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जिसके बियॉन्ड तो आई फोकस कर सकती है, कहां से? 25 सेंटीमीटर टिल इंफिनिटी. वहां पर आई को फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. हर ऑब्जेक्ट की जो 25 सेंटीमीटर एंड बियॉन्ड रखा हुआ उसको आसानी से फोकस कर लेगी, उसकी एक शार्प इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म कर लेगी. लेकिन इफ द डिस्टेंस लाइज इन बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू द आई, and in that situation the image is not formed clearly, a blurred image is formed, and this particular distance is of importance to us, and we are going to call it as least distance of distinct vision. So this basic thing you should know about the human eye. The first thing you should try to understand the term power of accommodation, which is the natural ability of the human eye to focus nearby as well as distant object. And the second thing, the least distance of distinct vision, that means below 25 centimeter, the human eye cannot properly focus the image at our retina, or the image is not, or the object is not clearly focused at the retina, and that distance is also going to play a very vital role in all of our discussion of optical instruments. Now, another term that we need to understand now is going to be called as visual angle. What is visual angle? Visual angle happens to be the angle subtended either by the object or by the image at our eye. अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ने क्या एंगल सबटेंड किया ह्यूमन आई के ऊपर, या अगर मैं इमेज को देख रहा हूं तो इमेज ने क्या एंगल सबटेंड किया है आई के ऊपर, उस एंगल को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी, व्हाटसोएवर द एंगल इट हैज सब्जेक्टेड टू ऑन आवर आई, दिस एंगल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज विजुअल एंगल. नाउ if you notice here, AB is a very small object, short size object. So whatsoever the angle it has subjected, let's call it as alpha. And then what I'm going to do, I'm taking another object which is larger in size than AB.
And let's say this also subjects some angle, and let's call this angle subjected by the object PQ, let's call it as theta. So if you notice, a smaller object subjects a smaller angle at an eye, larger size object will be subjecting larger angle at an eye. So one can conclude that we are going to perceive the size of the image based on the visual angle subtended by the object or the image, as the case may be, at our eye. छोटा ऑब्जेक्ट ने छोटा विजुअल एंगल सबटेंड करना है, लार्जर ने तो लार्जर विजुअल एंगल सबटेंड करना है. तो अब अगर मैं किसी भी तरीके से इस विजुअल एंगल को इनलार्ज कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं by using a proper system of lenses, then definitely क्योंकि लार्ज विजुअल एंगल हमारी आई पे सबटेंड हुआ, तो मैं उसका जो अपरेंट साइज है उस ऑब्जेक्ट का, वो मुझे बहुत लार्ज दिखाई देने वाला है. दिस फॉर्म्स द वेरी बेसिक ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो अब हम करेंगे क्या, हमारी कोशिश होगी कि हम एक प्रॉपर लेंस सिस्टम की मदद से जो आई के ऊपर विजुअल एंगल पड़ रहा है, मैं उसको इनलार्ज या इनहैंस कर सकूं. सो if I can increase the visual angle subtended either by the object or by the image at our eye, then definitely I am going to visualize that object or that image in a larger size. That is what is the basic rule for going for any optical instrument, and this concept all defines the operating principle of any optical instrument. So what is the operating principle of any optical instrument? By the use of proper lens system, that means by the use of proper lens system, what we are going to do, we will try to subtend a larger visual angle at the eye. Now, whenever the larger visual angle at our eye is subtended, you will find the apparent size of the object is going to increase. Apparent, why I'm using this word apparent, you understand, whenever any keyword is added, there is a reason behind it. So the apparent size of the object is going to increase. Apparent means actual size of the object remains the same, but the size that is going to appear to me has got increased because of the larger visual angle. And this is what is the basic operating principle for any optical instrument. Now, understanding these two basic terminology, one was power of accommodation and another one is visual angle, followed by also least distance of distinct vision. Let's define a term called as angular magnification or magnifying power for any optical instrument. How do we define angular magnification? Angular magnification or magnifying power is defined as the ratio. किसका रेशियो है भाई? रेशियो ऑफ द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज. तो जो कुछ भी फाइनल इमेज बनी है, उसने क्या विजुअल एंगल हमारी आई के ऊपर सबटेंड किया? टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड डिस्टिंक्टली बाय एन अनएडेड आई. बच्चों, यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ बाय एन अनएडेड आई, when viewed distinctly by an unaided eye, this is an important line, this is an important aspect which you need to understand. So take care about this statement. Without this statement, your definition of magnifying power will be treated as wrong. How I am defining it? I am defining it as the visual angle subtended by the final image. So whatsoever the final image is formed by the use of any optical instrument, we are going to take that thing into account. And we are going to find its ratio with the visual angle subtended by the object. लेकिन इसके साथ एक स्टेटमेंट है, उसके साथ एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट कर दिया गया स्टेटमेंट कि you need to view the object distinctly with the help of unaided eye. That means I should view the object without the use of any instrument. Then only this angle alpha is going to get defined. So take care. In this expression, beta happens to be visual angle subtended by the final image. Visual angle subtended
by the final image. By the final image. So whatsoever the final image is formed in the by the use of that particular instrument, and find that visual angle, and then find the visual angle subtended by the object. Now with this, it is not just the visual angle subtended by the object. There is a condition imposed. What is the condition that is imposed? Visual angle subtended by the object when viewed distinctly by unaided eye. अब बच्चों यहाँ पे इस स्टेटमेंट में अनएडेड आई का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को आप सेपरेटली व्यू कर रहे हो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तब जो उसने विजुअल एंगल सबटेंड किया है उस एंगल के बारे में डेफिनेशन बात कर रहा है। और उसके साथ साथ एक और कंडीशन लगी, व्हेन व्यूड डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली व्यू करने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा जाना चाहिए डायरेक्टली व्यू करने के लिए। कम से कम 25 सेंटीमीटर से लेस पे रखोगे तो ब्लर्ड इमेज बनेगी रेटिना पे, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट को रखा जाए। तो दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। You are already aware of the fact that whenever we are talking about whenever we are discussing anything in ray optics, we generally take one basic assumption into account, and that assumption is the angles made either by the incident ray or the between the incident ray and the normal, or refracted ray or the normal, or the principal axis. So all the angles that are made are very, very small, and since these angles are very, very small, so what one can do, one can bring the trigonometrical approximation which says that if the angles are small, then if angles are small, then theta is approximately equal to tan theta, is equal to sin theta and is equal to tan theta. तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है, इस अप्रोक्सीमेशन को हम हमेशा अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी एप्लीकेशन से ही हम लोग सारे डेरिवेशंस को इंक्लूड करते हैं इसको किसी भी डेरिवेशंस के लिए। तो हम यहाँ पर उस एस्पेक्ट को, उस चीज को भी ले आ रहे हैं। तो बीटा is going to be replaced by tan beta and alpha is going to replace by tan alpha because the angles are very, very small. So with this I get the definition for magnifying power, which happens to be denoted by capital M. याद रखिएगा बच्चों, इसी के साथ साथ एक और मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। Linear magnification क्या होता है? Linear magnification happens to be the ratio of the size of the image to the size of the object. So this is linear magnification denoted by symbol small m, and it is defined as size of the image. So whatever the image is formed upon size of the object. Or simply you can say it as A1, B1, AI, BI, where I am using in order to talk about image, upon AB, which is the object. And remember, this is always going to be mentioned with a sign plus or minus. The plus sign comes for erect images, images which are erect with respect to the object, and minus sign comes for all those images which are inverted with respect to the object. Also, this particular expression was then obtained to be equal to plus minus V upon U. What is V over here in this expression? V used to indicate the image distance from the optical center of the lens, and U happens to be the object distance from the optical center of the lens. तो बच्चों ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव भी किया था
और डिस्कस भी किया था जब हम लोगों ने लेंसेज के ऊपर डिस्कशन की थी। तो ये यहाँ पर भी इस्तेमाल में आएगा, जहां कहीं पर भी मैं इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो पाऊंगा तो उसको मैं लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि स्मॉल m से डिनोट कर दूंगा। तो फॉर एनी लेंस देयर विल बी नाउ यू हैव there are now two types of magnification. One is linear magnification, which is talking only for the ratio of the size of the image upon size of the object, and then I've got angular magnification, which is talking about the visual angle subtended by the final image and the visual angle subtended by the object when viewed distinctly by any unaided eye. So there are going to be two magnification now for your study, one being the linear magnification, another now is going to be called as angular magnification. I expect that you all must have noted all these points categorically in your copy. So I'm going to rub whatsoever being written onto the board. Have you all noted it down, bachcho? Yes, sir. Now, when we are going to talk about optical instrument, we are also going to talk about two specific value of angular magnification. What are those two specific values of magnifying power or angular magnification? One is called as angular magnification at relaxed eye condition. Another one is called as angular magnification at normal vision condition. तो रिलैक्स्ड आई कंडीशन क्या है? रिलैक्स्ड आई कंडीशन तब बनती है जब फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और नॉर्मल विजन कंडीशन कब बनती है? जब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आपसे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं। तो डेरिवेशंस में आपसे तीन तरह की या तीन चीजें पूछी जाती हैं। एक तो होता है जनरल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या डिराइव करना होगा? जनरल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन। जनरल एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये आप डिराइव करते हैं भाई सबसे पहले। तो फिर आप इसमें दो स्पेसिफिक केसेस आपसे कहा जा सकता है डिराइव करने के लिए। एक होता है कैपिटल एम इंफिनिटी, यानी इसका मतलब क्या है कैपिटल एम इंफिनिटी डिराइव करने का? यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन वैल्यू विद द फाइनल इमेजेस एट इंफिनिटी। ओके, तो this you need to understand how to calculate, how to find it out. This is the angular magnification final images at infinity, when final image is at infinity. And the second one that is going to be asked to you is angular magnification at least distant of distinct vision, and this is going to be formed when the final image is formed at day. तो ये दो स्पेसिफिक कंडीशंस पे आपको हर डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इसको कई बार न्यूमेरिकल्स में या टीचर कहेगा कंडीशन ऑफ रिलैक्स्ड आई। तो इस नाम से ही पुकारा जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए। जब टीचर कहे रिलैक्स्ड आई कंडीशन में निकालो, तो आपको मालूम होना चाहिए रिलैक्स्ड आई कंडीशन क्या है। इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल विजन कंडीशन। तो ये आपकी नॉर्मल विजन कंडीशन कहलाती है। तो ये दोनों नॉमेनक्लेचर आपको मालूम होने चाहिए, इनको कहते क्या है और उसमें कंडीशन क्या इंपोज है। जब मैं कह रहा हूँ रिलैक्स्ड आई, तो इसका कंडीशन का मतलब हो गया फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। अगर मैं कह रहा हूँ नॉर्मल विजन, इसका मतलब हो गया फाइनल इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो ये सारा काम अब आपको करना है। हमारे पास तीन तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग की कोशिश है एटलीस्ट 2 को खत्म करेंगे। पहला होगा सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होगा आज के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और तीसरा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोबब्ली वो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कर पाएंगे, वो होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ये तीन हमारे पास एज पर द सिलेबस ऑफ आईएससी वी हैव गॉट 3 optical instruments which we need to study. So accordingly we are going to start by one. Now let's begin with the very first, and that is the simple microscope.
अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई, ये एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन इस कॉन्वेक्स लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको हम यूज में लाएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप हैपेंस टू बी अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कब बनता है, जब तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो, लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज अपर्चर के साइज का। जब आप कोई भी कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हो तो उसको हम कहते हैं भाई ये बन गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब मन में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी आर सेइंग लार्ज फोकल लेंथ, व्हाई वी आर सेइंग लार्ज अपर्चर, कांट वी जस्ट हैव सेड कि भाई फोकल लेंथ ले ले, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ले ले और उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप या सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास। बच्चों इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, तो दिस इज आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए क्यों जरूरत है मुझे एक ऐसे कॉन्वेक्स लेंस की जिसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है कि उसकी फोकल लेंथ लार्ज और लार्ज अपर्चर हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई लार्ज अपर्चर होना क्यों जरूरी है। Why we are taking a convex lens of large aperture? लार्ज अपर्चर का मतलब हो गया कि भाई उसका साइज जो है ना लेंस का वो बड़ा हो। अपर्चर कहते हैं होल को, यानी एक बड़े साइज का, ऐसे लार्ज अपर्चर के साइज का हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। लार्ज अपर्चर क्यों लिया जाता है, उसके पीछे एक सिंपल सा कारण है बच्चों, सो एज टू अलाउ एज मच अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू द लेंस and thereby I can get a bright image। अरे कम लाइट जाएगी तो कम ब्राइटर इमेज होगा, ज्यादा लाइट से इमेज बनेगी तो ज्यादा ब्राइट इमेज होगा, उसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी, वो चमकीला दिखेगा। So that's the reason why. So why we are taking a large aperture size of convex lens, so that large amount of light gets focus and we get brighter image. So that's the first reason why we are talking about a convex lens of large aperture. Now the question arises why we need to have a convex lens of large focal length. तो भाई ये large focal length का convex lens लेने के पीछे का concept क्या है? Let's try to understand that part. See, when you are talking about convex lens behaving like a magnifying glass, a convex lens gives us a highly magnified image in a condition. And what is that condition? With a convex lens you can only obtain a highly magnified image. I'm talking about not magnified, I'm talking about highly magnified. See, that's where the emphasis lies. That's becomes the keyword, highly magnified image. Whenever object is placed, whenever object is placed between focus and optical center of the lens. तो बच्चों यहां देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है और ये पॉइंट उसका फोकस है। तो तुम हाईली मैग्निफाइड इमेज कब पाते हो, जब ऑब्जेक्ट कहीं पर भी इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कहीं पर भी रख दो, ऐसे इन जगहों पे। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखूंगा तभी इसकी हाईली मैग्निफाइड इमेज कहीं पीछे ऐसे तैयार होगी। क्लियर बात है? तो अगर तुम चाहते हो कि इसकी तुम्हें हाईली मैग्निफाइड इमेज मिले
So you need to place the object between focus and optical center of the lens. Now, suppose if you are using a lens of small focal length, so what would happen? It becomes very difficult for me to place the object between the focus and optical center, isn't it? अगर तुम्हारे पास फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस छोटा हुआ तो बड़ा डिफिकल्ट होगा तुम्हें ऑब्जेक्ट को इस रीजन में प्लेस करना। भाई इसी रीजन में प्लेस करेंगे तभी तो उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज तैयार होने वाली है। सो इजिली, ये तुम्हारे लिए एट ईज हो, आसानी से तुम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर प्लेस कर सको, तब ही तो मुझे हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है। तो इसलिए हम लोग एक लार्ज फोकल लेंथ का लेंस यूज करते हैं, so that the object can easily be placed between focus and optical center of the lens. So that is the reason why these two conditions are important. Am I clear बच्चों? Is this much बात तुम लोग को सबको समझ में आ गई? Yes sir. Yes sir. Girls, can you also respond please? Yes sir. Okay. तो अब इस कॉन्सेप्ट के साथ कि भाई जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर का। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं रे डायग्राम की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं। चलिए एक रे डायग्राम बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए वी ऑलवेज टेक टू रेज, one running parallel to the principal axis. After refraction it passes through the focus of the lens. Another ray that we take is the ray which passes through the optical center of the lens, and this ray goes undeviated. So you can see this particular ray to go undeviated. Now since these two rays, both the rays are divergent in nature, they are diverging from each other. ये कहीं इधर आके meet ही नहीं कर सकती हैं, cannot meet। ठीक है, पैरेलल होती तो कहां मीट कर जाती? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे आके मीट ही नहीं कर सकती। तो व्हाट आई नीड टू डू नाउ, आई नीड टू प्रोड्यूस देम बैकवर्ड, एंड एज आई प्रोड्यूस देम बैकवर्ड यू कैन सी they go at some point, they meet each other at some point, and the point where they have met or where they have intersected with each other, that is the point where the image will be formed, and you can see a highly magnified image A1 B1 of the object has been formed, and that is what is the basic action of a simple microscope or a magnifying glass, कि I get a highly magnified image. So this is how the ray diagram for a magnifying glass or a simple microscope is to be made. And the nature of the lens, as I told you, it is going to be a convex lens of large focal length and large aperture. Now understanding the ray diagram, now what we are going to do, we will move on to obtain an expression for magnifying power. तो बच्चों अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, इसी को आप क्या कहेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन के नाम से भी कॉल अपॉन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दिस इज कैपिटल एम और मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर अभी आपने ध्यान दिया हो तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हाउ डू वी डिफाइन एंगुलर मैग्निफिकेशन। वी डिफाइन एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपिटल एम एज द रेशियो ऑफ visual angle subtended by the final image to the visual angle subtended by the object when viewed distinctly by any unaided eye. So remember alpha के साथ condition लगी, it has to be viewed distinctly by unaided eye। तो इस बात को भूलिएगा नहीं भाई आप लोग। और this can be rewritten as tan beta upon tan alpha। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, बीटा अपॉन अल्फा व्हिच इन टर्न हैपेंस टू बी इक्वल टू tan beta upon tan alpha. So I need to find out tan beta. What is tan beta?
How do we define tan beta? Or what was beta angle? Beta angle is the angle subtended by the final image. So what I need to do, where is my final image? Can I locate my final image? You can see the final image is over here. This is my final image, A1, B1. What is the angle that it subtends at our eyes? So here what we are going to do, we are going to measure the angle with respect to the principal axis. तो A1 B1 ने principal axis के ऊपर या principal axis से क्या angle subtend किया, कोई सारे distances हम principal axis के about measure करते हैं कि parallel measure करते हैं, principal axis के parallel measure करते हैं बच्चों, इसलिए हम एंगल भी किससे मेजर करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो तुम देख सकते हो ये A1 B1 है, तो इसने क्या एंगल प्रिंसिपल एक्सिस पे सबटेंड किया है, एंड इफ यू सी आई हैव हाइलाइटेड दैट एंगल, so this angle is beta, and you can see that what I have done, I have taken a right angle triangle. Why I am taking a right angle triangle with A1 B1? अरे भाई सीधे सीधे देखो ना, मुझे tan बीटा की वैल्यू चाहिए, tan sin cos जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइंड है बच्चों। तो इस वजह से मैंने क्या किया है, A1 B1 ने जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एंगल सबटेंड किया, उससे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार किया है, और अब मैं tan बीटा को इस ट्रायंगल से फाइंड करने जा रहा हूं। तो चलिए tan बीटा निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ा होगा, तो मैं लिख देता हूं यूजिंग टी रेशियो, सभी को मालूम है टी रेशियोज के बारे में। तो लेट मी जस्ट पुट इट एज यूजिंग टी रेशियो। मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में भी किसी का भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बात करने जा रहा हूं tan बीटा की। वो भी क्यों, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन में बच्चों ऊपर एक्सप्रेशन नंबर 1 में जरूरत है tan बीटा की, तो मैं tan बीटा की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो tan बीटा होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जूनियर क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर देखो इस एंगल, ये है एंगल बीटा, और ये रहा हमारा ट्रायंगल A1 B1 C। इस ट्रायंगल में tan बीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि देखो इट इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। तो मैं फाइनल इमेज के ऊपर ध्यान दूंगा, मैं इसमें नहीं चला जाऊंगा, ये तो ऑब्जेक्ट है भाई, इसमें कहां जा रहे हो, हमें फाइनल इमेज में बात करनी है ना। तो फाइनल इमेज क्या हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है ना, A1 B1। तो इसमें क्या हुआ, A1 B1 परपेंडिकुलर तो है, यही है ना, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता जी, अपॉन बेस। बेस क्या है इस ट्रायंगल का, अगर तुम नोटिस करो तो ये है बेस। क्या है बेस बच्चों, CB1। तो अब ये आ गया मेरे पास tan बीटा की वैल्यू। अच्छा, अब ये तो tan बीटा मैथमेटिक्स से डिफाइंड हुआ, A1 B1 अपॉन CB1। बच्चों CB1 डिस्टेंस की एक इंपॉर्टेंस है। ये कौन सा डिस्टेंस है, इसको कुछ कहते हैं, उससे कुछ समझते हो। CB1 क्या है, ये है इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द लेंस, और फिजिक्स में इस डिस्टेंस को हम लोग V साइन से डिनोट करते हैं ना। प्रीवियस क्लास अगर अटेंड करी होगी आप लोगों ने, तो आपने जरूर उस बात को सुनना और समझा होगा कि इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं V, इमेज डिस्टेंस। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में ही सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हूं, उसके साथ साथ फिजिक्स को भी लाना है, तो A1 B1 एज इट इज रहने देता हूं, और CB1 को इमेज डिस्टेंस यानी V से डिनोट कर देता हूं भाई। तो ये आ गया मेरे पास tan बीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट में मेरे पास आता है tan अल्फा। देख रहे हैं यहाँ पे tan अल्फा। अब ये tan अल्फा क्या है, डेफिनेशन अगर तुम्हें याद हो अल्फा की, तो अल्फा क्या था, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ना। यहां पे हम रुके नहीं थे, इसके साथ एक कंडीशन दी थी। क्या कंडीशन दी थी, when viewed distinctly by an unaided eye, यानी अब जो है इस ऑब्जेक्ट को तुम्हें इंस्ट्रूमेंट से व्यू नहीं करना बच्चों। तो ये गलती नहीं करना, कई बुक्स करती हैं गलती कि यहीं पे अल्फा अल्फा डिफाइन करने लग जाते हैं। अल्फा यहां डिफाइंड ही नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। डेफिनेशन ने साफ साफ कहा है कि इट इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट विद अ कंडीशन। क्या कंडीशन है, when viewed distinctly by an unaided eye। तो भैया इस रे डायग्राम में अल्फा कैन नॉट बी डिफाइंड, प्लीज टेक केयर, अल्फा कैन नॉट बी डिफाइंड इन दिस ट्रायंगल, इन दिस डायग्राम, ओके। अल्फा डज नॉट गेट्स डिफाइंड ओवर हियर।
does not get defined in this ray diagram. Is this clear to everyone? Yes, sir. प्लीज अगर किताब में भी डायग्राम में बना है अल्फा तो उसको छोड़ दीजिए, गलत बना दिया उस ऑथर ने. अल्फा by definition cannot be defined in this diagram. Please take care, girls. Siddhi, are you there? Tina, are you Yes, sir. Yes, sir. Is this clear to everyone? Alpha cannot be getting defined by this particular ray diagram. I need a diagram separately. So you can see what I have done. I have taken the object AB separately, and then whatsoever the angle it is subtending at the eye in the horizontal level, that angle I am interested in knowing, and this angle only will define the alpha. So if you notice from this particular triangle, the triangle that has been shown to you on the top right corner, इस ट्रायंगल में ही अल्फा डिफाइन हो रहा बच्चों. तो ये जो ट्रायंगल है जो हाईलाइट हो रहा है इस समय, ये ट्रायंगल हमें tan अल्फा की वैल्यू डिफाइन करता है. और क्या है tan अल्फा? क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ tan अल्फा? फिर से वही डेफिनेशन देखो ना tan अल्फा की, क्या थी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पे अल्फा क्या परपेंडिकुलर कौन सा? ये है tan अल्फा का परपेंडिकुलर AB. और बेस कितना? So if you remember, we were trying to find out the value of tan alpha. So with this triangle, we will get the value of tan alpha, and the tan alpha will be equal to AB, that is the perpendicular AB upon D. So earlier we have calculated tan beta. Now I've got the value of tan alpha also. And for angular magnification capital M, we have got the ratio of the two, that is tan beta upon tan alpha. So what is tan beta? That is A1 B1 upon V divided by AB upon D. Now I'm going to rearrange this. So on rearranging, this will become A1 B1 upon AB into D upon V. Now, what is A1 B1? That is the size of the image. What is AB? That is the size of the object. So if you see, this is the size of the image and this happens to be the size of the object. So this is nothing but the linear magnification. So this becomes small m. What does small m signifies? Linear magnification into D by V. Now, if you remember, just now, a few minutes earlier, I have told you that the linear magnification is defined as size of the image upon size of the object, and this was in turn equal to V by U. What is V? Where V used to be the image distance and U used to be the object distance with a sign of plus or minus, and this sign is applied on the basis whether the image is inverted with respect to object or whether the image is erect with respect to the object. If it is erect with respect to the object, we always put a plus sign, and if it is inverted with respect to the object, then we definitely put a minus sign. Now, if you notice over here, and what I'm going to do, I'm going to use this particular definition of linear magnification, and I'm going to substitute the value. Now, refer to the diagram, and you can see the A1, B1, that is the image, is erect with respect to the object. So the sign of this A1, B1 becomes plus, because it is erect with respect to the object. Divided, the sign comes plus, and the formula is V by U. So what I'm going to do, I'm going to put up this value over here. So I'm going to get capital M as plus V by U into D by V. Now this V and this V cancels out, so I get a general expression for angular magnification as plus D by U.
So this is the expression for general magnification of of a simple microscope. Take care, make a note of the derivation part. You might be asked to derive, so you should know the basics about derivation for magnifying power. And this was for simple microscope. Now same thing we are going to do for compound microscope also, but as and when we are going to arrive onto that part, then we are going to discuss that part. Now I hope everybody must have taken a note of it. Can Yaya or Siddhi, can you all confirm you all have taken a note of it? Tina? Sir, 1 minute. Sir. Once you are done, please let me know. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में डिस्कस किया था मैग्नीफाइंग पावर का। याद आ रहा है? थोड़ी देर पहले जब मैग्नीफाइंग पावर का मैंने को डिफाइन किया था, वहां पे दो केसेस भी डिस्कस किए थे। क्या क्या थे वो दो केस? अगर तुम देखोगे तो वहां पर दो केसेस थे। पहला केस होता था मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई एंड मैग्नीफाइंग पावर एट नॉर्मल विजन। तो दो सिचुएशंस थी जिनको हम लोगों ने वहां पर डिराइव किया था। याद आया कुछ? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. तो बच्चों अब हम नेक्स्ट स्टेप में यही काम करने जा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी इन हैंड क्या है? हमारे पास ऑलरेडी इन हैंड है कैपिटल एम की वैल्यू, दैट इज कैपिटल डी अपॉन यू। ठीक है ना? और ये क्या है? जनरल एक्सप्रेशन आ गया है हमारे एंगुलर मैग्निफिकेशन का। देयर आर टू इंपॉर्टेंट केसेस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस और द फर्स्ट वेरी केस इज द कंडीशन ऑफ रिलैक्स्ड आई। अब बच्चों रिलैक्स्ड आई क्या होता है? रिलैक्स्ड आई की कंडीशन तब कहते हैं जब फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी पे जाके बन जाए। ठीक है? अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? लेंस के फोकस पे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि अगर इमेज बनती है इंफिनिटी पे तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है? ऑब्जेक्ट रखा होता है एट द फोकस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाता है? फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है बच्चों। तो अब तुम्हारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो तुम निकाल चुके थे। वो क्या था? D अपॉन U। अब U कितना है इस केस में? इस केस में U तो है F के बराबर। तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया M is equals to D upon F, and this is going to be known as angular magnification for relaxed eye condition of the lens. तो बच्चों ध्यान रखिएगा इस एक्सप्रेशन का। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलैक्स्ड आई at the relaxed eye condition for simple microscope? तो you know it has to be D by F। या पूछा जा सकता है derive करके दिखाओ, then you have to derive this much part as we have done in our earlier discussion। यहां तक लेके आए, फिर इस कंडीशन को इंपोज किया, और फिर मैंने ये कंडीशन के बाद इस वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। So this was the first part, your first case. The second case that you have got in our discussion is the case number 2, which is talking about द नॉर्मल विजन कंडीशन। नॉर्मल विजन कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि भाई फाइनल इमेज जो बनी है A1 B1 वो कहां बन रही है? फाइनल इमेज A1 B1 इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये जो फाइनल इमेज A1 B1 है वो अभी तो कहीं भी बना के रख दी थी हमने, वैल्यू दे दी थी V। लेकिन अब जो स्पेसिफिक कंडीशन है इसमें क्या है कि V जो है वो D के बराबर ही, यानी इमेज जो बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पर बनी हो फाइनल इमेज। तो अगर इमेज, फाइनल इमेज अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे चाहता हूं तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए? तो
तो ये चीज अब हमें डिटरमाइन करनी है कि ऑब्जेक्ट कहां, क्योंकि देखो इस एक्सप्रेशन में v की जरूरत नहीं है, इस एक्सप्रेशन में किसकी जरूरत है, u की। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई नीड टू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। हमें v तो पता है, लेकिन क्या नहीं पता है इसमें, हमें u की वैल्यू नहीं पता है बच्चों। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट नाउ इज व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u, what should be the value of u। तो I need to find out the value of u। ठीक है, v हमें पता चल गया, v कहां चाहिए, v हमें चाहिए d पे। तो अगर v d पे है तो u कहां पे, अब कैसे निकालेंगे। तो तुम्हारे पास गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन अगर याद हो, उन लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीक में, गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन पढ़ा गया था। क्या था गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट वाज 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f। ठीक है, ये गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन थी बच्चों, याद आ गया पिछले टर्म पे, पिछले वीक में हम लोग के द्वारा पढ़ा गया ये इक्वेशन, डिराइव भी किया था लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ। और ये देखो यहाँ पे क्या लगाया हमने, एस्ट्रिक। इस एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जिन फॉर्मुलेज में मैं एस्ट्रिक लगा के आपको दिखाता हूं उस फॉर्मूले का मतलब होता, प्लीज डोंट सी दिस एस्ट्रिक, ओके, दिस एस्ट्रिक वाज जस्ट टू हाईलाइट दिस। जो आपके नोट्स में एस्ट्रिक लगे होंगे, मैं उन फॉर्मुलेस की बात कर रहा हूं, ये तो सिंपली ऐसे है। तो इस एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि यूज दिस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ coordinate sign convention। The formula must be used with the help of coordinate sign convention। अब हम लोगों ने सारी चीजें प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखी हैं, अगेन एंड अगेन रीआइटरेट नहीं करना चाहता हूं, जहां जहां जरूरत होगी मैं वहां वहां पे रीआइटरेट करता रहूंगा। अब कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में दो तीन चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन काफी इजीली आप अप्लाई कर लेंगे। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन में, वो क्या है, object should be placed on the left side of the lens। object needs to be placed on the left side। ये रिक्वायरमेंट है भैया, यहीं रखना है, लेफ्ट साइड ही रखना है, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये सिंपलेस्ट वे से है, उसका मतलब नहीं हो तो क्या, वो तो फिर मतलब उसके ऑप्शंस हम लोगों ने पढ़े थे, नहीं हो तो क्या। अब वो नहीं वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे, और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्ट बच्चों आपके लेफ्ट हैंड साइड में रखा होगा। सेकंड, optical center to be treated like origin and all the distances to be measured from the optical center। तो second statement क्या है कि optical center, all the distance to be measured from the optical center, all distances to be measured from optical center, all distances to be measured from optical center, to be measured from ऑप्टिकल सेंटर। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, प्लीज जो लोगों का छूटा हुआ है कोशिश करिए कि उसको नोट कर लें। तीसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हो तो लेफ्ट यू गो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, गिव अ साइन नेगेटिव। लेफ्ट यू गो फ्रॉम ओसी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, गिव अ माइनस साइन, एंड राइट पॉजिटिव। क्लियर है? एंड राइट यू गो फ्रॉम ओसी, गिव अ पॉजिटिव साइन। क्लियर है बात बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा सा इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में देखो, डायग्राम को हम लोग रिविजिट कर रहे हैं। डायग्राम क्या है, लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड। तो इफ यू नोटिस द डायग्राम सेज object is placed on the left hand side, very correct। and if you notice all the distances to be measured from the optical center, this is the center C। अब सेंटर से अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए जाता हूं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे हो गया, तो u विल बी माइनस u। क्लियर है बात बच्चों? क्योंकि मैंने ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट गया हूं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और यहां पर देखो ये v के लिए भी मैं लेफ्ट जा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस u है, v भी चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है बच्चों, इसलिए v की वैल्यू भी माइनस d होगी। क्लियर है ये बात?
Is this clear to everyone? Please tell me. Yes, sir. What I'm going to do, I'm going to substitute this in our formula. So now I know that u is a negative as well as v is also negative. What I know, u is negative as well as v is also negative. Clear hai baat itni? U is negative as well as r v is also negative, isn't it? So what I am going to substitute this in this particular equation. So 1 upon v के लिए क्या लगा दिया, माइनस डी माइनस यू. देखो माइनस यू क्यों लगाना, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो मैंने लेफ्ट जाके मेजर किया था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है बच्चों, इसलिए माइनस यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ. एफ पॉजिटिव लेना है क्योंकि तुम्हारे पास दिया हुआ लेंस कॉन्वेक्स नेचर का, तो एफ पॉजिटिव. तो यहां से फॉर्मूला बन के आया -1 बाई डी, और ये माइनस एंड ये माइनस कंबाइन होके बन गया बच्चों प्लस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ. और इसमें मुझे 1 बाई यू की जरूरत पड़ने वाली है, तो 1 बाई यू की जरूरत पड़ी, तो ये क्या निकल के आ गया 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू. आना कुत्ते की क्या है इतना? Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So what I have done, I have got the value of 1 by u as equal to 1 by f plus 1 by d. Now what I need to do, I need to substitute this value in our general expression. What is our general expression? Capital M is equals to d by u. Now this can also be written as d into 1 by u, isn't it? So capital M is equals to d into, and what is the value of 1 by f, 1 by u, and that is 1 by f plus 1 by d. Now cross, let's multiply it out. So capital M will be equal to d by f. I'm taking this d inside the bracket, so d by f plus d by d. Here d by d will cancel out each other, so you will get the value of capital M being equal to d by f plus 1. So this is the value of capital M at the condition of normal vision, that is when the final image is formed at least distance of distinct vision. So this was the expression for M at infinity, and this was the expression for M at D. This is known as relaxed eye condition, bachcho, whereas this is going to be known as normal vision condition. Is this much clear to every one of you? Yes, sir. So this Yes, is, sir. so I hope you all must have noted it down in your copy. Solve the numerical problem based on to it from your book, your textbook.